Good morning, every students. I am Madhu Shwasa. I teach computer subject. Dear students, before summer vacation, we had completed our chapter first. Now, after summer vacation, we will start our chapter second. Chapter second is learn to use MS Windows 10. Now, let us firstly we will start introduction to operating system. What is operating system? Operating system is a software that helps you to operate the computer system through its various functions. Operating system is a software that helps you to operate the computer system through its various parts. It controls and manages the different parts of computer system. It is interface between user and computer. Dear students, what is computer? Suppose I am a easy example to you. Suppose आप अपने घरों में देखते होंगे कि सारे वर्क कंप्लीटेड होते हैं इन प्रॉपर वे में. Dear students, you notice that our home in completed all works in proper way. प्रॉपर वे में वर्क को कौन कंप्लीट करता है? प्रॉपर वे में वर्क को कंप्लीट करने के लिए विद द हेल्प ऑफ पेरेंट्स, आपके पेरेंट्स आपकी मदद करते हैं या आपके पेरेंट्स की मदद से आपके घर के सारे वर्क्स प्रॉपर वे में कंप्लीट होते हैं. सिमिलरली द कंप्यूटर also completed the all activities, all works in proper way with the help of operating system. या हम यूँ कहें कि कंप्यूटर में जो भी वर्क प्रॉपर वे में मैनेज होते हैं, सारे कंप्यूटर की पार्ट्स जो मैनेज किए जाते हैं, वो मैनेजिंग का वर्क ऑपरेटिंग सिस्टम करता है. ऑपरेटिंग सिस्टम इज द मैनेज ऑल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम. देयर आर डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम. There are different operating systems of MS Windows, Linux, Unix, Mac OS. MS Windows is the most popular operating system software in the world. Windows operating system is the most popular operating system software in the world. It is made by Microsoft Corporation, US. William Henry Gates is the co-founder and former chairman of the Microsoft Corporation. He developed the first version of the Windows operating system in 1983. Windows operating system like as MS Windows 95, Windows 98, MS Windows 2000, MS Windows Vista, MS Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 and latest version of Windows, MS Windows is the Windows 10.
MS Windows is the latest version of the Windows 10. Dear students, now let us discuss about the features of Windows 10. Dear students, now discuss about features of Windows 10. Windows 10 features. What is Windows 10 feature? It is very easy to use. Windows 10 features. It is very easy to use. यूज में बहुत ही आसानी से होता है. नेक्स्ट, you do not have remember all commands. You do not remember have all commands. I have small pictures called icon. इसमें जो भी छोटे छोटे पिक्चर्स होते हैं उसे हम आइकन्स के नाम से जानते हैं. प्रोग्राम आर अरेंज्ड इन डिफरेंट फाइल्स, फोल्डर और डायरेक्टरी. जो भी प्रोग्राम विंडोज 10 में होता है उसे हम विभिन्न फाइल्स, फोल्डर और डायरेक्टरीज में अरेंज करते हैं या स्टोर करते हैं. Dear students, without operating system, we cannot start the computer. बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के कंप्यूटर हम स्टार्ट नहीं कर सकते हैं. बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के हम कंप्यूटर स्टार्ट नहीं कर सकते. फर्स्टली, when we on the switches, जैसे ही हम कंप्यूटर की स्विच को ऑन करते हैं, we get the first screen is appear. It's called desktop. The first screen get appear is called desktop. Windows 10 desktop. The desktop generally has the following items. Windows 10 desktop पे generally items appear होते हैं. Icons and tasks. Icons, my computer, document are used to store files or folder. Next, icon. The small logos, pictures or symbol present on the desktop is called icon. Icon used to open files or folder or program. Next, taskbar. The long horizontal bar on the bottom is called taskbar. Here is taskbar. The taskbar left side corner present in the start button. Start button used to open the all programs. Next, middle button, taskbar, middle button, and next notification area. Middle button, middle section of the bar shows the open programs. You can also call quick lock toolbar. यहाँ से हम किसी भी प्रोग्राम्स को
जल्दी और इजी वे में ओपन कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट राइट बटन, टास्क बार राइट बटन कॉर्नर is called notification area. The right of the taskbar known as the notification area. Notification, it is included the clock and group of the icons that tell the status of notification area running of the program. Dear students, I hope you understand of Windows 10 or operating system. What is the operating system? Are features of Windows 10. So much of the remaining topics for today. Next topic I will complete the next one. Thank you.